Hi, I am Jaidevi Mehta, image coach, a style coach, and a personality development coach. I'm going to tell you 3 techniques to create the best version of yourself. 1. The power of image transformation. 2. The dressing well. And 3. Personality enhancement. So, let me start with the first point, image transformation. आपको पता है मेरे एक क्लाइंट थे. शी वॉज इन हर टीन्स. वो उसका स्कूलिंग बस ख़त्म हुआ था और समर वेकेशन था, फिर वो कॉलेज ज्वाइन करने वाली थी. बट वो स्कूल में हमेशा एक कॉर्नर में बैठती थी क्लास में. शी यूज्ड टू गेट टीज्ड, यू नो. शी डिडंट हैव मैनी फ्रेंड्स. वो एकदम डल रहती थी, अकेले जाती थी, अकेले खाती थी, ब्रेक में अकेले आती थी. शी डिडंट हैव मैनी फ्रेंड्स. So क्या हुआ कि when she came to me in summer, I had to do her overall grooming. तो मैंने उसको पूरा चेंज कर दिया. मैंने उसको बोला grow your hair, change your makeup routine, change the way you speak, the way you walk as in not the normal walk but the way you walk with heels or maybe with dressing, with skirts, how you sit, body language. ये सब मैंने चेंज किया. उससे उसका पूरा इमेज ट्रांसफॉर्म हो गया. उसके लिए मैंने कॉन्टैक्ट्स बनाए, उसके फ्रेंड्स के साथ उसको सोशलाइजिंग करने के लिए बोला. मैंने उसको इतनी सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ दी कि यू गो एंड ट्राई दिस, जॉइन सम क्लासेस. सो ये पूरा जब उसने समर में कॉलेज ज्वाइन किया तो वो एकदम कैटरपिलर से पूरी बटरफ्लाई बन गई थी. सो विच वॉज अ वेरी ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन एंड वन ऑफ द बेस्ट क्लाइंट ऑफ माइन. So when she showed up in college, she got immense compliments. She was noticed by everybody. She started participating in all the extracurricular activities and she felt amazing. And she knew how to make others feel good too. तो वो उसका एक बड़ा प्लस पॉइंट था. तो उसने उसकी नई इमेज के साथ इतने सारे लोगों को इतना इंस्पायर किया, नए कॉन्फिडेंस लाए, एंड शी एडेड मोर करेज टू एवरीथिंग. शी वॉज अमेज्ड by the new power she discovered just by changing how she looked. It was like, wow. Okay? From my experience, I can say that changing your image can actually transform your life, right? Today, I'll show you 3 ways. 1, it will show how you feel about yourself, your inner narrativeness, as in like आप कैसे बात करते हो आपके साथ internally. जैसे कि मैं तो अच्छी नहीं हूँ यार, ये मेरे साथ क्या हो गया, ये क्यों हो रहा है. नो, यू हैव टू बी पॉजिटिव. से अरे ये है, चलो ये चैलेंज लेते हैं, मैं दिखा देती हूँ कैसे होता है. सेकेंड, अदर्स परसीव यू. मतलब ओके, इसके लिए हम एक चीज़ करते हैं, डिस्क्राइब योर सेल्फ इन 3 एडजेक्टिव्स. ओके, से मे बी इंटेलिजेंट, स्मार्ट, ब्यूटिफुल. ओके, इसको हम किसी और को पूछो कि हाउ डू यू लुक और व्हाट आर द फर्स्ट 3 एडजेक्टिव्स दैट कम इन योर माइंड. दे विल से मे बी इंटेलिजेंट, स्मार्ट, cheerful, bubbly or whatever. वो देखो आप, वो दोनों मैच हो रहे हैं. जो वो देखो वो मैच नहीं हो रहे हैं, तो फिर that's where I come in between. I will match that. I'll make whatever you feel from inside will show from your outer appearance. So वो मैच करेंगे हम. इसके लिए you have to enroll in our course, जो लिंक नीचे दी है. Third is kind of opportunity and people you attract. First impressions can open the closed doors. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. One of my clients was a teacher. वो टीचर थे पर वो मेरे पास आए थे few months के लिए to transform. तो उन्होंने अपना पूरा लुक चेंज किया, हेयर स्टाइल चेंज की, मेकअप चेंज किया, लिपस्टिक शेड्स चेंज किए. लिपस्टिक शेड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर टीचर बिकॉज उनको सब सुनते हैं और हाफ ऑफ द टाइम उनके फेस पे ही अट्रैक्शन और अटेंशन होता है. इसीलिए उनको ये चेंजेस लाए एंड देन she got more invitations, she was invited to more lectures, she got more attention. उनको seriously लेने लगे students. उनका पूरा image attractive होने लगा, वो एकदम positive होने लगे. लोग उनको compliment देते थे कि हमें अच्छा लगता है आपको सुनने. So that's how the whole image changed. I would end this with a quote which says, never underestimate an outfit
the power of an outfit on a bad day. You know, just it fixes you, and it can help you feel more better about yourself. Second, dressing. Who you are and how do you want to show up in the world, right? Dressing mein I'll tell you 10 tips on how to dress, how dressing is beneficial. 1. It helps you pay attention to detail. 2. It is a form of self-care. 3. It helps build consistency. 4. It keeps you focused on the week ahead, right? Because you've already know how do you want to dress. 5th, encourages creativity and risk-taking. You start experimenting with clothes. You see how it's gonna suit you, or how are you gonna carry it. You know, kahin na kahin thoda risk aa hi jata hai. 6th, brings joy in others' life. People like to talk to you. They would come, ask you where this outfit is from, or how are you carrying it so nicely. I love the color. Compliments milegi. So it brings joys to others' life too. Keeps you disciplined. मतलब you know you have to dress well. तो आप iron करके ही clothes पहनोगे. So that's how you are disciplined. Next, increases your confidence. Of course, इतने लोग बात करने आएंगे, आप अच्छा ड्रेस करोगे, you feel good, तो automatically confidence भी increase होगा. Next, gives feeling of accomplishment. आपको लगता है कि आपने कुछ accomplish किया है, आपने time दिया है अपने dressing को, अपने आप को, तो it feels good, right? And the last is it makes you feel good and gives compliments from others. So that's one of the main thing that you need in today's world, right? आप attractive लगोगे, magnetic लगोगे. Third, personality enhancement. So I'm going to tell you my secrets. It's very useful and I have tried and tested. Don't worry. So I'm going to tell you 5 to 7 points, the strategies. So my first strategy is conversation ratio, meaning कि आप जो बात करते हो, आप जो सुनते हो, आप कम बोलो, ज़्यादा सुनो. आप कम बोलोगे तो ज़्यादा सुनोगे, तो सामने आपके जो फ्रेंड होंगे वो या कोई कलीग होगा या जो भी आपसे बात कर रहा होगा will give you more attention. उनको लगेगा you are listening. उनको लगेगा that okay he or she can trust you. कैसे होगा ये? तो 75% is listening and 25% is speaking. मतलब कि when you are talking to someone, आप ये भी ध्यान रखना कि आप cultivate करो habit of active listening. मतलब keep responding saying oh wow, oh yes, really, ऐसा हुआ क्या? Superb. Like keep nodding also. Every time you do not have to say this और ज़्यादा भी नहीं बोलना है, पर normal बोलो, nod करो, show that you are interested in listening to them, right? Also एक और टिप है, जब आप वो इंसान से दोबारा मिलते हो तो आप पहले के कन्वर्सेशन में जो बोला हो वो वापस याद करो. मे बी हे हाउ इज़ योर फादर नाउ, हाउ इज़ ही डूइंग. तो इससे आपकी इम्प्रेशन भी अच्छी होगी, आपकी पर्सनैलिटी भी एनहेंस होगी कि ही रिमेंबर्स हाउ, उसको अटेंशन दे रहे हैं हम, राइट? डोंट यूज़ मी टू सिंड्रोम टू मच. ओह मी टू, मेरे को भी अच्छा लगता है, ओह मी टू, मैं भी ऐसा करती हूँ. नहीं, वी आर लिसनिंग टू देम, सो गिव दैट अटेंशन. Maintain kind eyes and warm smile. That's the last thing I would say in this strategy. Second strategy is icebreaker jokes. मतलब कि आप एक ग्रुप में गए हो और आपको इंट्रोड्यूस करना है आपके सेल्फ को और सब फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं. क्रैक अ जोक ऑन योर सेल्फ. इफ़ यू क्रैक अ जोक ऑन योर सेल्फ, यू नो एवरीवन विल लाफ और पूरा ग्रुप एकदम रिलैक्स हो जाएगा, देखेगा आप बहुत कॉन्फिडेंस हो, आपके साथ सब आएंगे बातें करने के लिए. So that's a trick. The third strategy is name card. Name card is very important and very effective. How? Use names frequently. Not too much. हर एक sentence पे नाम use मत करना. But every 4-5 sentence you use that person's name whom you are talking to. Don't overdo it and don't fumble with names. That's a no-no. Fourth strategy is my secret strategy. That is, promise me you won't tell anyone. Okay. So a philosopher said, when something is scarce or something is short, you know, उसकी जब shortage होती है, सब पूरा bundle में बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, तो people find it attractive,
है ना, वो इंसान उससे अट्रैक्ट होता है। तो उससे बोलते हैं कि इफ़ यू वांट टू चूज़ योर इनर सर्कल वेल, यू स्पीक लेस, give more secrets and let them trust you. When you share a secret with your friend, he's gonna trust you कि ओह मेरे को secret बोला, मेरे को trust किया है, so बहुत अच्छी बात है कि मैं भी उसको trust करूँगा ज़्यादा. So that's how you build a inner circle and inner friends. इसमें एक टिप है. टिप ये है कि आप अपनी सीक्रेट बोलना, बाजू वाले फ्रेंड्स की मत बोलना कभी. वो अच्छा नहीं दिखेगा, वो आपकी पर्सनैलिटी एनहेंस नहीं होगी. Fifth strategy is roots of interest. Meaning, have you met a person who keeps speaking the topic over and over and over again and you are bored to death? मतलब आप इतना वो इंसान एक टॉपिक बोलता है कि आप बस अब चुप हो जा, ऐसा लगता है. So a charismatic person is one who can talk fluently with a wide range of topics and knowledge and passion towards it, right? वो कोई भी टॉपिक दे दो पर वो बात कर पाएगा, थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएगा. कोई टॉपिक नहीं आता, शो इंटरेस्ट, आस्क क्वेश्चंस, रिस्पेक्ट देयर ओन प्रेफरेंस, देयर थॉट्स एंड देयर ओपिनियंस. हर एक पर्सन का थॉट, ओपिनियन और प्रेफरेंस होता है. यू डोंट काउंटर आर्ग्यू बट यू रिस्पेक्ट. Strategy 6 is magnet of friends. Meaning, how to be a magnet of friends. You know, so if you socialize often, this will be a great source of confidence for you. People like you not only for who you are, but they like you to make them feel good. अगर आप आपके friends को अच्छा दिखते हो, अच्छा feel करवाते हो, तो वो वापस आएंगे आपके पास. वो और आपको return में they will make you feel good too. It's the perfect magnet for your friends. Okay. 7th strategy is art of saying no. Say no politely. Say no. I know it's difficult to say no, but say it politely कि I'm sorry, I am too full on my plate today. आज मेरे से नहीं हो पाएगा. और say I'm afraid I have a commitment. I won't be able to do it. Sorry. Or do everything with a smile. Like say no, but everything with a smile. So I hope these 7 techniques will help you become the charismatic, the magnetic, the attractive and super confident person you are. If you want to do this course in detail, then check the link below. There is a course of mine on guniguru.com. It said image makeover for women. Thank you.